start? नमस्कार, मीडिया के यहाँ उपस्थित साथियों को मैं स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही मैं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव श्री अजय सेठ, सीबीआईसी अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल और मंच पर उपस्थित सीबीआईसी के आदरणीय सदस्यों और अन्य उच्च अधिकारियों का भी स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कुछ देर पहले ही संपन्न हुई। माननीय वित्त मंत्री जी इस बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को अभी हमारे साथ साझा करेंगी, जिसके बाद हम मीडिया से प्रश्न लेंगे। ब्रीफिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रख लें। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज की बैठक के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दें। Thank you, ma'am. Thank you very much. I'll give broad indications of the decisions taken so that my opening statement doesn't become too long, and post that on specific items I can always elaborate. See, I'll first go by the rate changes on goods, particularly specifically also where the rates have come down or exemptions have been happening. So a reduction in the rate of fortified rice kernels, which are classifiable under 1904, to 5%. As you know, fortified rice kernels are supplied with an intent of they getting passed on to the PDS. So the poor benefit from it, and it was a conscious decision that we bring the price down, the tax down. Next is gene therapy, which is now very critical for life-saving measures taken for very life-threatening diseases, have been totally exempt. LR-SAM system is very important in defense, surface-to-air missile. So in that, we've decided to extend the IGST exemption, which are provided to systems, subsystems, equipment, parts, subparts, tools, test equipment, software meant for assembly and manufacture of LR-SAM. All of them have always been exempted, but now the exemption is further extended. It was, I think in 2019, the exemption was provided. Now it is, the exemption continues, so we've extended it. Then there is a reduction in the rate of compensation cess to 0.1% on supplies to merchant exporters, at par with the GST rate on such supplies. So this was a particularly important request which had come from traders and exporters. In order to help exporters, this relief is being provided. Otherwise, their working capital was getting blocked because they pay it and then claim back. So this is with a clear intent of helping exporters. Next is to exempt IGST imports of all equipment and consumable samples by inspection teams of the International Atomic Energy Agency, the IAEA, subject to specific conditions. Then this is another important step which you can link with the fortified rice that I spoke about, also to help the weaker sections, to extend the concessional 5% GST
on input of food preparations that are supplied for food preparations intended for free distribution to economically weaker sections under a government program subject to existing conditions. So this is also an extension of the 5% rate which prevails for food items which go into food preparation that is used for free distribution for the weaker sections. So these are the reduction or exemption or extension of rates. There are such for services, I'm not elaborating it for this minute. There are clarifications also being issued on ACC blocks containing more than 50% fly ash. If it has more than 50% fly ash content, it will fall under a particular HS code of 6815 and it will attract 12% GST. This is very important. The next one, which is also a clarification, that black pepper, whether fresh green black pepper or dried black pepper and raisins, that is kishmish, when supplied by an agriculturist, is not liable to GST. So when a merchant buys it and sells it, is a different story. But if the agriculturist himself, call him a farmer, call him a plantation worker, if he himself is giving it or a small person is giving it, then it is not liable to GST. Then this will be important to amend the definition of pre-packaged and labeled items to cover all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 liters, which are pre-packed as defined by the Legal Metrology Act, or a label affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Act. This is also very important because it's an amendment, so that that clarification has, for the lack of it, has created a lot of confusion. So we are defining what actually is prepackaged and packaged. Before I get into the detail of other, there's one other important thing. Payment aggregators who do less than 2,000 rupees payment are eligible for exemption. But let us understand, and I provide this clarification now, that this exemption does not cover payment gateways and other fintech services which do not involve settlement of funds. So payment aggregators alone, I'm talking about, who do less than 2,000 rupees will have that exemption provided. Another important decision, there are several which will be covered in detail in your press note, which all of you all will receive. I clarify that no GST is payable on the penal charges levied and collected by banks and NBFCs from borrowers for non-compliance with loan terms. This will be very important for small businesses. So I repeat it. The council has desired that we issue a clarification that no GST is payable on the penal charges levied and collected by banks and NBFCs from borrowers for non-compliance with terms, loan terms. Before I get into the specific details of others, broad items of interest for all of you all, I'd like to list them out. There are about 8 of them. We have our Minister of State, Pankaj Chaudhary ji, who chaired the compensation cess related
group of ministers. They have given a request to the council, which the council has accepted today, that they need more time to get into the details. So that has been given an extension. Nothing specifically mentioned about the term, but extension has been provided. Then there was this request placed on the agenda whether ATF, air traffic fuel, should be brought into the GST, because periodically we've had airlines telling us, civil aviation requesting us that ATF should be brought into the GST. It's not been agreed on. States did not feel comfortable. They didn't want ATF because they saw it as part of the crude petroleum diesel basket, and therefore they said that alone cannot be taken out, and therefore that continues to remain where it is today. There was also a suggestion just ATF could be put to a GOM so that they can think whether it is worthy of consideration to be brought into the GST, but they did not want anything done about ATF. So that is the second. Third, the GOM on health insurance. In fact, I may suggest that I must inform that the chairman of that GOM, Deputy Chief Minister of Bihar, was for almost just before lunch, he left. He was there in the morning session. And since he had to leave a bit early, he decided that the council take that issue up first. And he did say that after good work, it's felt that it requires more time, and therefore health insurance related GOM work also requires more time, so they have gone to take more time. On one or two specific grounds, which I would like to put before you as to why it had to have more time, insurance, and therefore the insurance regulators' input is awaited. IRDAI, the Insurance Regulatory and Development Authorities, inputs have not come. So the GOM felt that it needed a bit more time. The rate rationalization, GOM, also needs more time. Again, there, I would like to inform through you, the media, that speculation about what the rate rationalization is doing is seen everywhere. And there are reports which are also carried on saying it may be like this, it may be like that, even in the media, because that's in the air and therefore you'll also report on it. मगर उसका रिपोर्ट फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए मैं बहुत ही विनम्रता से आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, स्पेकुलेशन में नहीं रिपोर्ट करना चाहिए, स्पेकुलेशन आधारित रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेट, टैक्स रेट के ऊपर स्पेकुलेशन करना, उसका असर पूरे सोसाइटी के ऊपर लगता है और सभी वर्गों के ऊपर मन में ये चिंता हो जाती है कि क्या होने वाले हैं, क्या बढ़ेगा, कम होगा, घटेगा. ये स्पेकुलेशन में प्लीज मत भाग लेना, क्योंकि कमिटी का काम खत्म नहीं हुआ है. I honestly want media to please check up every time with the concerned people. क्या इसमें फाइनल हो गया है, निर्णय हुआ है कि नहीं, ये चेक करके छपाइए ना. छपाने में लोगों के मन में बहुत सारे चिंता आ जाता है कि होने वाले हैं, नहीं होने वाले, इंक्रीज होने वाले. So my request is the committees have not finalized, the GOMs have not finalized, and they have legitimate reasons which the which the GST Council has appreciated. हाँ, उनको और समय चाहिए. इसीलिए इस बीच में स्पेकुलेशन में मत जाना. Speculation on these very sensitive matters is not really good for any one of us. So rate rationalization has also not finalized its report. They need a bit more time. एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ. छोटे कंपनियों रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि आपके बिजनेस साइज क्या है, कितने साल से हैं,
आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले हैं, कॉम्पनसेशन और व्हाट इज इट, योर स्मॉल कंपनी, ये सब प्रश्न आता है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है, and that concept note today received in principle approval of the GST Council. This will bring in new registration process, which of course will require an amendment in the law. Act में छोटा सा amendment का जरूरत भी पड़ेगा, मगर वो concept note को विस्तार से पढ़ने के बाद, उसको GST Council approve करने के बाद हम जो अमेंडमेंट करना है वो करेंगे। मकसद एक ही है कि छोटे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन आसानी से होना चाहिए, और उनको, जिन कंपनियों को आईटीसी भी छोटा है, उन कंपनीज का इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो सिंप्लीफिकेशन को मन में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट नोट टेबल किया गया है, एंड द काउंसिल हैज इन प्रिंसिपल गिवन इट्स अप्रूवल। The next one, again मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन इसके ऊपर भी हुआ, मैं इसको आपके सामने रखना चाह रही हूँ। ये डिसीजन डेफर हुआ है, मगर डिसीजन मैं बोल रही हूँ, विषय बोल रही हूँ। क्विक कॉमर्स के द्वारा या डिलीवरी प्लेटफॉर्म के द्वारा, ई कॉमर्स के द्वारा फूड डिलीवरी जब होता है, उसमें फूड का रेट में टैक्स करें, डिलीवरी के लिए अलग टैक्स करें, डिलीवरी के लिए अलग कितना टैक्स करना है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुआ। पिछले एक सप्ताह से मैं देख रही हूँ न्यूज़पेपर्स में कंपनियों का नाम लेकर के, इनके ऊपर 18 होगा, बड़े क्विक कॉमर्स में इतना होगा, क्या खाने के चीज में 5% जब लग रही है, घर में पहुंचने में उसका 18% टैक्स होगा क्या? अगेन मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ जीएसटी काउंसिल के बिहाफ में, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है, ये डिफर हुआ है, जिससे जीओएम इसके ऊपर विस्तार से और एक बार चेक करेगी। क्या क्विक कॉमर्स के द्वारा घर में खाना मंगवाना, और जब खाने के चीज के ऊपर 5% है, डिलीवरी के लिए ज्यादा होना है कि नहीं होना है, क्या है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुआ है और इसका निर्णय नहीं हुआ। और जब तक निर्णय जीएसटी काउंसिल तक नहीं आता, उसके ऊपर प्लीज स्पेकुलेट नहीं करना। अगला एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रख रही हूं। इस बिल्डिंग बनाने के समय फ्लोर स्पेस इंडेक्स, बिल्डिंग बनाने के समय एफएसआई जो बोलते हैं, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में होना है या फॉरवर्ड चार्ज में होना है, इसके ऊपर भी एक विषय एजेंडा में आया। जीएसटी लगता है उसके ऊपर, मगर क्या रिवर्स में होना है, फॉरवर्ड में होना है, ये म्युनिसिपैलिटी तक, उनके रेवेन्यू तक प्रभावित होने वाले एक निर्णय है। बिकॉज एफएसआई लार्जली इज रेज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी लेवल अथॉरिटीज, एंड इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में लगना या फॉरवर्ड चार्ज में लगना लगता है जीएसटी, मगर इस कंफ्यूजन में बहुत सारे स्पेकुलेशन हो रहा था, ये एजेंडा में भी आया, इसमें भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। क्योंकि निर्णय नहीं हुआ, मगर ज्यादातर लोग और हम भी मानते हैं कि ये म्युनिसिपैलिटी लेवल का रेवेन्यू इम्प्लीकेशन वाली चीज है। इसमें लैंड से बनाया, मतलब बिना लैंड बिल्डिंग तो नहीं बन पाते, सो लैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट्स सब्जेक्ट। सो वी फेल्ट इसके ऊपर कोई चर्चा ऐसे होना नहीं चाहिए, दे विल टॉक अबाउट इट in detail. So decision nahi hua. Magar two important factors which came for recognition is that it will affect the municipality's revenue. It will also be on a terrain of or a subject of the state
which is land. So उसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ. फिटमेंट कमेटी ने इसमें हाँ बरवाई कि we should look at it, we should take it up and all that. कल ऑफिसर्स मीटिंग जहां हुई, हमारी रेवेन्यू सेक्रेटरी who's holding additional charge, secretary EA Ajay Seth ji clearly said we should think about it because it has an implication on the states, it has an implication on municipalities, and that came for discussion, and therefore it also went through the process of deferring it. It will go to the committee or we'll think about it. The eighth point which I want to draw your attention is training partners, skill training partners of the National Skill Development Council. उनको जो अप्रूव्ड पार्टनर्स है, नॉट एवरीबडी, जो अप्रूव्ड पार्टनर्स है, उनको जीएसटी एग्जेम्प्ट करने के लिए निर्णय हुआ है, मगर नोटिफिकेशन आएगा बाद में. So these are 8 main things on which I want to draw your attention. But there are 3 things on which, even as the GST Council was busy deliberating, from the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स. मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है. कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है. पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए. पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं. सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ. एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है. सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की. व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है. इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer namkeen. इसीलिए उसका रेट अलग है. So वो थोड़ा आपके प्रेस नोट में हम विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. विषय को समझकर प्लीज जितने भी आपके मीडिया के द्वारा स्प्रेड करना है करिए. दूसरा एक विषय, मैं पेमेंट एग्रीगेटर्स का भी इसी में जोड़ा, मगर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन पेमेंट एग्रीगेटर्स. दूसरा एक विषय है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन करती हूं. ईवी व्हीकल्स, उसके ऊपर भी सुबह से चल रही है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनल नहीं हो. ईवी व्हीकल्स के ऊपर ये एब्सोल्युटली क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि नया व्हीकल्स ईवी खरीदने में 5% है. Am I right? 5%. पुराने ईवी व्हीकल्स खरीदने का विषय ही आया है. We want to promote EV. GST Council is in favor of EV. Nobody is stopping people from buying EV. मगर used EV खरीदने के समय
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेल करेगा तो कोई नहीं है उसमें. The same thing as 5%. No GST. Sorry. Used EV. An individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it, and then sells it. It was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come. And category mein, therefore used cars category mein EV bhi hai, petrol vehicle bhi hai, diesel vehicle bhi hai. And I like to highlight this point to you. हमारी तरफ से केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज 1/3 मेंबर ऑफ द जीएसटी, हमारी तरफ से एजेंडा में सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड ईवी व्हीकल्स को 12 से 5 तक ले आने के लिए वी हैड सजेस्टेड. बट व्हेन द डिस्कशंस हैपेंड, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. So EV vehicle का हमारे recommendation तो 5 को ले आओ उसको भी जैसे EV का नया vehicle का rate है. मगर after विस्तार discussion, the marginal value के ऊपर ही ये 18% डाला जा रहा है जैसे कि हर used vehicle का है. So more can be asked as question. It is not a blind application of 18%. It is more thoughtfully done. Our recommendation was for 5%, but post that, the discussions have resulted in this. Open for questions. With your permission, we will start the question and answer session. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना हाथ खड़ा करें, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं हम एक एक करके सबके प्रश्न लेंगे. Please introduce yourself with your name and organization name before asking the question. हाँ जी, आप पूछेंगे. मैडम नमस्ते, मैं फर्स्ट इंडिया से ऋतुराज शर्मा, डॉक्टर ऋतुराज शर्मा. मैडम सामने प्लीज. मैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल से हूँ. मैडम ये पूछना चाहूँगा कि जो राजस्थान के तरह तरह के हस्तशिल्प उत्पाद हैं, राजस्थान के पर्यटन उद्योग है, राजस्थान में जो टेक्सटाइल का भीलवाड़ा का बड़ा उद्योग है, इन तमाम उद्योगों को लेकर कुछ जीएसटी में कमी या रियायत देने का कुछ है. यहाँ पास में ही क्षेत्र में मसाला उद्योग भी बहुत फेमस है, तो उसको लेकर कुछ आपके पास आए होंगे तरह तरह के ज्ञापन, तो कुछ उसमें रियायत देने का है, जीएसटी में कमी या रियायत या और कुछ, या इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति? आज की जीएसटी काउंसिल में उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ है. अगर आया है तो भी फिटमेंट कमेटी और बाकी कमेटी के द्वारा वो प्रोसेस करने के बाद ही काउंसिल के एजेंडा में आएगा, मगर आज के एजेंडा में नहीं था. जब मैं बुलाऊंगी आप, है ना? आंचल आप पूछेंगे. Ma'am, Andhra's minister outside said that he made a proposal about a special 1% additional rate over the 28% rate. So what was that proposal? Because he said you agreed for it to be referred to GOM. So if you could elaborate. Let me recall, in 2018, Kerala, after a disaster, natural disaster, sought the permission of the council and then levied 1% on B2C on all items, and that lasted for 2 years.
It was a request made by Kerala in 2018. It was sent to a GOM. The GOM considered it, and post that the council was placed the agenda. The council then approved it in 2019. So whilst the sentiment in the house was, yes, Andhra had a major flooding and they required to be like Kerala given the facility, and as that was being discussed, Telangana said even they have faced a crisis. Himachal, quoting 2 years or 1 year ago, the flooding and cloudburst that they suffered from, said even we suffered. Then West Bengal said even they have faced floods. So, and there was one more state which also said even we have suffered. So I took the sense of the house, because I did say that when the decision of Kerala happened, there was no decision of the council to say if ever in the future any such state suffers and comes to the council saying we want to invoke that 1% which is provided in the law in the name of the disaster. At that time, the decision was not of the council to say in the future also any state comes, you can do this. So I said, I'm not sure if an existing practice prevails as a precedent for me to take it forward. So let it also, like in the case of Kerala, let it also be taken to the GOM. Let the GOM think about it. And interestingly, एक और पॉइंट भी आया है कि डिजास्टर मतलब कौन सा डिजास्टर, सिर्फ बाढ़, सिर्फ साइक्लोन, सूखा को क्यों नहीं डिजास्टर मानते? ये भी आया, नॉर्थ कर्नाटका का कोट करके कर्नाटका का मंत्री जी उसका भी जिक्र किया. फिर आया बात वेस्ट बंगाल से कि वो बोले सेस, उस समय केरला उनका एक्स्ट्रा टैक्स को सेस बताया. It was collected as flood cess or something like that. उन्होंने सही एक टेक्निकल पॉइंट काउंसिल के सामने रखा कि सेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जीएसटी का सेस कलेक्ट करने का अधिकार ही नहीं है. आप कैसे सेस कलेक्ट करोगे डिजास्टर के लिए? सो इतनी सारे डिस्कशन होने के बाद मैं सजेस्ट की काउंसिल को और उचित समझा कि काउंसिल इसके ऊपर निर्णय लें कि क्या हर बार एक स्टेट में कुछ होता है तो उनका इन्वोक करने के लिए काउंसिल में आने के तुरंत बाद हम मानना है कि उसका एक प्रोसेस है कि नहीं, क्योंकि आखिर जनता के ऊपर टैक्स के बोझ जब बनता है उसके लिए अधिकार तो प्रॉपरली लेड आउट प्रोसीजर के द्वारा होना है. सो एवरीबडी अग्रीड. आई एम ग्लैड टू से इवन आंध्रास मिनिस्टर अग्रीड. हाँ, फिर तो एक जीओएम बने और उसमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, तेलंगाना सब भाग लेने के लिए वॉलंटियर किया है. बाकी सब मिनिस्टर्स जिनको भी चाहिए वो भी आएंगे उसमें. सो द GOM will decide what it should be named, whether every disaster can be given, which disaster declared by who will have to have that power. Will the GST council then have a format or whatever? So the GOM will decide on all these details and उसके ऊपर निर्णय तब होगा काउंसिल के द्वारा. Hello, ma'am. This is Priyashmita from Informist Media. Ma'am, with regards to rate rationalization panel, while this is part of the speculation that you mentioned, but about 148 items were on the list, some of which were what exactly deferred the decision on even those simple items? And secondly, on health insurance, were there any concerns about profiteering risks, considering the anti-profiteering watchdog will not be working from 2025 April? So were there risks about price cuts not being passed on to consumers? Thank you. All kind of factors are being discussed. On the rate rationalization, despite the speculation, I'm saying I credit the ministers who are in that team, who have gone into great detail. I'm very tempted by the expression that you're using, low-hanging fruit, usko to nipatna chahiye. No, it's a holistic exercise. It's a holistic exercise of looking at reducing the burden on common daily use items and looking at rates which
will have to come down from where they have been for now 4-5 years. There is a level of stabilization which all the members in the council, not just in the GOM, have agreed. Yes, now it is stabilizing. So it is the time for us to look at item by item. So they are looking at it in a very holistic fashion. But the issues which are not so much looking at clear the low hanging fruits and we'll baki baad mein dekha jayega, it has to be a holistic exercise, is something which the entire council is recognizing. Equally, sorry ma'am, sorry. Equally, it was just not the question of rate ko kam karo. It was also a question of kitni slab honge. 5, 12, 18, 28 or more or less. Simplification cannot be more. But yet, is there a justification for adding one more but cutting down one? So there is still a lot of detailed, germane to the issue of rate rationalization and simplification, which are yet to be finalized. And that is why rate rationalization का निर्णय भी आज नहीं हुआ है. Anti-profiteering, ma'am. Huh? On anti-profiteering. No, I told you that answers this also. Okay. मैम अमर फ्रॉम INS. मैम सीनियर सिटीजन्स की डिमांड्स थी कि लाइफ इंश्योरेंस में उनको GST कम कराना था. क्या उस पर डिस्कशन हुआ, कोई डिसीजन हुआ? GOM में विस्तार से डिस्कशन हुआ है और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी. फिर भी और थोड़ा जानकारी उनको चाहिए. जैसे कि मैंने मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया, इंश्योरेंस रेगुलेटर से भी उनको रेगुलेटर का गाइडेंस मिलना है. वो भी मिलने के बाद फिर फाइनलाइज करेंगे GOM, फिर आएगा काउंसिल में. Ma'am Karishma, this side from Business Today. Ma'am, I have two questions. One, just a clarification on the compensation cess. What is the timeline of extension that the committee is looking at? Secondly, ma'am, did any of the ministers raise any discussions on online gaming, even if they are happy about it? Last time you had shared that ministers were happy with the decision. No timeline has been given for the compensation cess GOM. MOS heads it, but no timeline has been given. The next one is extension has been given. No mention of gaming. Ma'am, Mahesh Dadis from DD India. Is there any taxation review about cab aggregators like Ola and Uber? दोबारा बोलिए. कैब एग्रीगेटर्स के बारे में कोई बात हुई है मैम? क्या? ओ, कुछ निर्णय नहीं हुआ है और विस्तार से स्टडी करने के लिए ही हुआ. Ma'am, Tarun from Z Business, ma'am. Auto companies says there is requirement of the clarification on 22% says on the utility vehicle, ma'am. The 1500 cc engine and 170 mm ground clearance. And second, ma'am, is there any discussion on the temporary registration facility for traders, ma'am? Was it the part of this GST Council agenda? अजय और आप अग्रवाल जी बोलिए वो vehicles के ऊपर. Yeah, regarding SUVs, that compensation cess. So that issue was clarified, and it was decided that. Mike. Yeah, I'm using the mic, ma'am. Mike, it's not red. Now it's red. Yes. Now it's, yeah. Regarding compensation cess, which is applicable on SUV, whether it is on ground clearance on unladen basis or laden basis, that was by adding a explanation. It got clarified by way of that amendment from 26 July 23. And whether for the past period, this clarification or explanation which has been appended will apply or not. So that was deliberated and it has been decided that it will apply prospectively.
1 minute, 1 minute, 1 minute. Temporary registration. Yeah, in certain situations, to make the payment, a temporary in that respect, a provision has now been made in the law, has been recommended to make a provision in the law so that a temporary registration can be taken up for making the payment. Business Standard newspaper. Harsh Kumar this side from business. And the part of Priyansh, Priyansh. Yeah, ma'am. Sumit Chaturvedi, ET. Now would like to ask on this SUV compensation issue. It will be from the, retrospective effect, as you are saying. So can you clarify? I said it will be having the prospective effect. It will not apply to the past. It will not apply to the past. No retrospective. Date from which the notification, this explanation has been appended in the notification. The date from which this explanation has been appended in the notification, it will apply from that date onwards. For past, it will not apply. Sapna, you want to ask the question, please? Hi, thank you very much. Thank you very much, ma'am. Ma'am, one quick question you explained, but still some more, observations if possible from your end. The fact that the IRDS views have not been taken on the insurance GM report yet, but any reason why so much time is being taken? Because the industry is really, expecting some kind of relief to our consumers. Industry or insurance premium payers? On whose behalf? Sorry, the mic is off. They're talking in detail and therefore they're taking more time. And one more quick one was, ma'am, on the, could you give us the details that 5 and 18% been explaining? Could you give us the detail On what? on the popcorn issue? On the popcorn issue, please. Thank you very much. Yeah, regarding popcorn, the issue before the council was whether popcorn is classifiable after adding the salt and pepper under chapter 19 or elsewhere. So that issue has now been clarified, or recommendation has been made to clarify that it will fall under miscellaneous food items. Under chapter 21, there the rate applicable is 5% or 12%, depending upon whether it is sold in loose or in pre-packed condition. That is if it is namkeen. But if it is added sugar, I've given you the explanation. If caramel is applied on popcorn, it will go under chapter 17. There the rate applicable is 18%. Kindly ask the question, local media. मैम गोवर्धन चौधरी हूँ दैनिक भास्कर डिजिटल से। मेरा सवाल था, आपने एटीएफ पे डिस्कस किया, बहुत सारे स्टेट और पेट्रोल और डीजल, ये क्या जीएसटी में लाने के लिए कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कोई मुद्दा आया है या आगे फ्यूचर में आप इस पे विचार कर रहे हैं? क्या मतलब व्यू क्या है जीएसटी काउंसिल का? आज एटीएफ के विषय में चर्चा जब हुआ, ये स्पष्ट आया है, स्टेट्स ये नहीं चाहती है कि एटीएफ जीएसटी में आए। वो चाहते हैं जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल, एटीएफ भी स्टेट के अधिकार में रहे। आज भी उस विषय में हर स्टेट इतना स्पष्ट बोले कि जीएसटी में नहीं आना चाहिए, पेट्रोल हो, डीजल हो, एटीएफ हो। यही है मूड। Please go on. Ma'am, whether safari retreats related Supreme Court judgment was discussed in today's meeting? Like any decision or something? That was one of the agenda points. Okay. Thus, in case of safari retreats, Honorable Supreme Court pronounced that plant or machinery is not defined under GST law. What is explained is plant and machinery. That matter was looked into
and it was found that it was a pure drafting error, because plant and machinery, the term has been used at 11 places. Only in one place, it has been mentioned as plant or machinery. So that drafting error is now being corrected with effect from 1st July 2017. A recommendation in this regard has been made. This will require amendment in the GST law in that particular provision under section 17(5). So it will be carried out accordingly as per the recommendation made by the GST Council. That nullifies the Supreme Court order then, this amendment? In such cases, it is mentioned that notwithstanding anything pronounced in any court order, the provision will apply as it is now been amended. By Mike. सॉरी, मैं विमल भाटिया हूँ, आज तक से हूँ, जैसलमेर में ही रहता हूँ। एक सबसे बड़ी बात, कई बिजनेसमैन, कई लोग हमसे मिलते रहते हैं, तो सबकी बात ये रहती है कि जीएसटी का प्रोसेस को और सरलीकरण और इजी करना चाहिए। अवेयरनेस के लिए कई कैंपेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई कॉम्प्लिकेशन, ऐसी चीजें कई है जिसको लेके पेनल्टी लग जाते हैं, कई थ्रेटन है उसको लेके। तो क्यों ना एक छोटा सा एक अवेयरनेस कैंपेनिंग और इस प्रकार इस प्रोसेस को होना चाहिए। जी, थैंक यू। सुजाव लेती हूँ आपसे। Hi, ma'am. This is Girish from Mint. Ma'am, I'm looking forward to two little clarifications. Ma'am, has the rate rationalization GOM specify any, how much extra time that they may require to give their final recommendations? And secondly, ma'am, you have mentioned the two issues where law changes may be required. One is the registration for small companies, and which was the other one, if you could just give an idea. No, the concept note is got to be studied. In principle, the council has accepted it. Once the concept note is studied in detail, then again it will be presented before the GST council. Once they agree on simplifying as per the note, the registration process for small companies, then the amendment will have to be done in the law. So that is one thing which I referred. मेरा सुझाव है मैम, जो जीएसटी सालाना 2000 करोड़ सीएसडी को एग्जेम्प्ट करती है, उस सीएसडी का माल मार्केट में बिक रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बिलिंग अंडर बिलिंग होके माल बिक रहा है, उसमें जो जीएसटी का चोरी होता है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। सीएसडी के थ्रू जो माल की बिक्री होती है, वो डिफेंस पर्सनल के लिए होती है। हमारे आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं या फोर्सेस में काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उस पर छूट दी है। जहाँ तक आपने कहा कि उसमें अंडर बिलिंग हो रही है या वो माल बाहर बिक जाता है, पर लेकिन जब सीएसडी से बेचा जाता है, तब तो वो उन्हीं को बेचा जाता है जो आर्मी पर्सनल होते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई माल का डाइवर्जन हो रहा है, ऐसी कोई जानकारी डिपार्टमेंट के निगाह में आती है, तो ये एक एनफोर्समेंट का मैटर हो जाता है और उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, अगर ऐसी कोई जानकारी डिपार्टमेंट के संज्ञान में लाई जाती है। 1 मिनट, मेरा क्वेश्चन ये था, जीएसटी का जो ये हो रहा है कैंटीन में, वो मार्केट में जो आता है, आर्मी पर्सन के लिए आप और छूट दो, मैं उसमें सहमत हूँ। जो मार्केट में आके बिक रहा है, वो कर का जो टैक्स का चोरी हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। नंबर 2, जो हॉस्पिटल में, जो होटल्स में, जो व्यापारी अंडर बिलिंग करके माल 100 रुपए का माल 50 में बिलिंग करके बेच रहा है, उसका हम लोग कैसे उसको रोक रहे हैं। जैसा कि आपने ये बोला कि जहाँ पर भी कहीं ऐसा होता है कि कोई अंडर बिलिंग कर रहा है या माल बिना बिल के बेच रहा है, विभाग के ध्यान में जैसी ही ऐसी कोई जानकारी आती है, उस पर अनुचित कार्रवाई की जाती है और उसमें कोई जो जीएसटी की जो चोरी हुई है, उसकी वसूली भी की जाती है। अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसी चीज है कि कहीं पे चोरी हो रही है, तो कृपया ये जानकारी हमें दें और उस पर हम कार्रवाई करेंगे।
This is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit, ma'am. Ma'am, as you, clarified that decision on the taxability over delivery services has been deferred. But ma'am, there are a lot of enforcement action going on against on the issue. So when could we expect some clarity on, and, where we could have some roadmap on the matter, that when it could be clarified? Shimiji, as you mentioned about the delivery service, which is provided by the e-commerce operator, uh, your question is related to restaurant services, delivery Yes, provided sir. in case Yes, of sir. restaurant service? Yes, sir. So in case of restaurant service, which is provided by electronic commerce, ECO, electronic commerce operator, there, apart from the food from the restaurant, it is delivered at the doorstep of the customer who is making such order. So this delivery service, which is because this ECO, this restaurant service is notified and a deeming provision has been created. So the ECO operator becomes the supplier of the restaurant service. In addition to restaurant service, a delivery is given at the doorstep of customer. So it becomes kind of composite service. So there was deliberation which took place that whether it should be at the rate of 5%, which is applicable to restaurant service, but in the council, after the deliberation, it has been decided that the committee, fitment committee, should look into all other aspects also, how it is going to impact the delivery which is performed in case of other ECO operators. So issue has been deferred for further deliberation, and in due course, it will be brought before the GST Council for clarification. So, sir, till then, what will happen to the notices sent to these food delivery platforms, sir, on the same issue, delivery services? The notices have been issued as per the appreciation of law by the investigating agencies, and these notices will take their own course. But the issue will be deliberated by the fitment committee and in due course will be brought before the GST Council for clarification. And the clarification will definitely have a bearing on the further course of action on those notices. In case those are confirmed, then it will have a bearing on when the matter will be taken up in appeal. Sure. आप पूछिए. मैम शंकरदान जी राजस्थान न्यूज जैसलमेर. मैम देश भर में ऐसी छोटी छोटी कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई है जो तकरीबन 70,000 से अधिक. बीच में एक अभियान भी चलाया गया था राष्ट्रवादी अभियान को लेकर. फर्जी रजिस्ट्रेशन करके बिना वास्तविक माल बेचने के खिलाफ क्रेडिट इनपुट लेकर लाखों रुपए की जीएसटी चोरी कर रही. उसको लेकर कुछ इस बैठक में चर्चा की गई. क्या किया जाए ऐसी फर्जी कंपनियों को रोकने के लिए? वही आंसर था ना उनको जो आंसर दी. फर्जी कंपनियों को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने, केंद्र के और स्टेट के डिपार्टमेंट्स ने समय समय पे अभियान चलाए हैं कि हम काफ़ी सारा डेटा जो हमारे पास में, उसके डेटा एनालिटिक्स करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज हो रही हैं, तो उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है. उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें भी कई सारे बदलाव किए गए. उसमें ये किया गया कि उसको रिस्क बेसिस में अगर हमें लगता है कि उसका बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिकेशन करना है, तो उसके लिए केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कि इस तरह के जो नए रेजिडेंट्स हैं उनको जाकर अपना बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कराना होता है. उसके बावजूद अगर ऐसा लगता है कि उसमें हमें उनके प्रेमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करने की आवश्यकता है, तो वो भी किया जाता है. उसके अलावा और बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं कि अगर एंटिटी अपना GST-1 रिटर्न फाइल करती है, तो अगर उसने GST-3 भी रिटर्न नहीं फाइल किया तो अगले महीने में वो GST-1 रिटर्न नहीं फाइल कर पाएगी और आगे वो फेक ITC नहीं पास कर पाएगी. तो पॉलिसी लेवल पे भी इस पे एक्शन लिया जा रहा है. उसके अलावा जहां पर एनफोर्समेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है वहां पे एनफोर्समेंट एक्शन भी लिए जा रहे हैं. सर ऐसे Just 1 minute. I want to bring in one more thing which will be useful for you to know. There was this decision taken which will be a relief for micro and small units and also for traders
who are under the composition scheme. If they have rented their premises from individuals who are unregistered entities, unregistered persons, so उनको GST exempt है. अगर छोटे बिजनेसदार या ट्रेडर या कोई ऐसे छोटे बिजनेसमैन एक जगह पर उनके दुकान रखा है, वो रेंट में लिया रखा है, और जहां से वो बिल्डिंग रेंट में लिया, वो अगर कॉम्पोजिशन में है और अनरजिस्टर्ड है, उनके ऊपर GST लागू नहीं होगा. Rent, on the rent, that is, because he's taken it on rent. Ma'am, just two clarifications. One is a follow-up on the safari retreats. There were a lot of notices and tax demands raised so what will happen to those tax demands now that there'll be redrafting of the provision itself? And also, was there an issue on taxation of gift vouchers taken up? Deepshika ji, to my knowledge, there are not many taxpayers who have taken ITC on the items which are used in construction of immovable property, or which we may say as civil structures. I think Safari Retreat was one of those very exceptional taxpayers who have taken ITC. And in fact, a judgment was pronounced by High Court a few years back, and department was in appeal in Supreme Court. But during this period also, we have not noticed that there are other taxpayers who have taken ITC. So I don't think that there are notices which are pending for adjudication. Second issue which you raised was vouchers. So on the vouchers, a view has been taken that vouchers are in the nature of actionable claims, and only certain types of actionable claims are subject to GST, which is, say, maybe gaming, gambling. So those are defined under Schedule 3 of the GST Act. So these actionable claims are not falling in that category. So therefore, these supplies are not subject to GST. Ma'am, just one clarification. You have already clarified that the GOM on health insurance need more time for deliberations, but if you can share with us, what was the broader view of the states? Are they in favor of reducing the tax or exempting, or they're still? They're still talking. So it hasn't come to the council. The GOM is discussing, and the GOM was given more time today. नमस्कार मैडम, दैनिक भास्कर से दीपक शर्मा। मैडम, यहाँ जो छोटे व्यापारी है उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये, ना तो वो जागरूक है ना वो समझ पाते हैं, उनके लिए GST एज एक बर्डन है। वो उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, जिसके कारण वो GST रिटर्न जो फाइल करते हैं उनमें उनका रिवाइज का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको लेकर उनके लिए GST बहुत बड़ा जो मामला हो जाता है। बड़े जो संस्थान है, कंपनीज है, वो तो उसमें प्रॉपर CA है, वो उनको काम करवा देते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी है, ना तो उनमें जागरूकता है ना उनके पास इक्विपमेंट है। तो रिवाइज का ऑप्शन अगर हो तो ये बहुत उनके लिए। इसके बारे में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि GST 1 रिटर्न जब फाइल करते हैं कोई भी छोटे या बड़े बिजनेसमैन, तो पीछे अपना एक प्रावधान लाया गया है कि GST 1A 3B से पहले फाइल किया जा सकता है, जिसमें अगर 1 में कोई त्रुटि रह गई है, कोई चीज़ छूट गई है, तो उसको उसमें वो GST 1 में इंक्लूड कर सकते हैं। और GST 1 और 1A उसके हिसाब से जो भी उनकी लाइबिलिटी बनती है उसको 3B में उसके हिसाब से वो टैक्स भर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ पहले उस पर छूट जाती है तो उनका जो एनुअल रिटर्न, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25, उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 नवंबर 2025 है। उसमें अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो वो उसमें उसको ठीक कर सकते हैं।
बट लेकिन जो इंडिविजुअल रिटर्न है 3B, उसमें वो फेरबदल नहीं कर सकते हैं? Switch on your mic. Delivery based apps case will be referred to GM. Ma'am, which GM will take care of this case, ma'am? आई विल ये जो डिलीवरी बेस्ड जो केसेस हैं जो कि फूड डिलीवरी करते हैं, वो जो फिटमेंट कमेटी में जहां ये इशू एग्जामिन हो रहा था, ये फिटमेंट कमेटी में ही उसके बारे में फर्दर डेलिब्रेशन होगा. Okay. Yes, ma'am. I Thank think you. there are no more questions. With your permission, we would like to close the media briefing. Thank you all of you for joining and enriching the press conference with your questions. I also thank the dignitaries on the dais. और मुझे बहुत आनंद हुआ जैसलमेर के इधर लोकल मीडिया आज भाग लिया और विस्तार से उनके प्रश्न भी उठाया गया, उसके लिए धन्यवाद. अगर उनको और प्रश्न है तो हमें ईमेल में भेजिए, जरूर आपसे संपर्क में रहेंगे और जवाब भी देंगे. थैंक यू. मैडम एक प्रेस रिलीज भी छोटी सी अगर स्पष्टीकरण को लेकर, कई तरह के स्पष्टीकरण को लेकर अगर पहुंचा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा. नहीं, आज का प्रेस नोट में सभी विषय विस्तार से बोला गया, हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलेगा. जी. ओह, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. नहीं, मैं जीएसटी काउंसिल में भी बोली कि इससे पहले केरल हमें उधर जीएसटी काउंसिल मीटिंग रखने के लिए बोला, उसके बाद तमिलनाडु हमें इनवाइट किया. फिर भी मैं आज धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमारे पूर्व रेवेन्यू सेक्रेटरी जो अभी गवर्नर बन गए रिजर्व बैंक का, संजय मल्होत्रा जी, उनके प्रयत्न से हम इधर आए, क्योंकि वो राजस्थान कैडर के हैं और उनके निर्णय एकदम बढ़िया निर्णय है. हम सबको आज बहुत ही मनपसंद जीएसटी मीटिंग का शहर मिला और कल शाम का भी और आज शाम का भी जो क्या बोलते हैं कल्चरल प्रोग्राम, दावत, सब जैसलमेर के क्या बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी का एक बढ़िया उदाहरण है. हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. ऑफ कोर्स बूस्टर करना है. थैंक यू. भविष्य में मल्होत्रा जी को कोई और अच्छी पोस्ट मिल सकती है, वित्त सचिव. थैंक यू. Come there. You're coming for the program now? No, come on. Oh, Ma'am, I will come if there is food. and file proper stories. Sir, especially the popcorn.